as our last topic done was human eye and parts of human eye, and our next topic is now defects of vision. There are mainly three types of defects, that are myopia, second one hypermetropia, and third one presbyopia. Now we will discuss these topics thoroughly. First topic, myopia. Myopia क्या होता है? In this condition, a person can see nearby objects clearly. You can write down in your notebook, in myopia, a person can see nearby objects clearly but cannot see distant objects clearly. इस कंडीशन में पर्सन नियर ऑब्जेक्ट्स फ्यू मीटर्स तक क्लियरली देख पाता है, बट जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे होते हैं, वो क्लियरली विजन नहीं होते, वो ब्लर नजर आते हैं. Myopia condition, you can see this video clearly. Objects travels in the usual way. It gets focused on the retina only. No problems there. What about the distant objects? First of all, the light rays from a faraway object coming towards the eye are almost parallel to each other. And when these rays enter the eye, they get converged in front of the retina instead of on the retina. This is the reason for blurriness. But what causes the light to converge in front of the retina rather than on the retina? The larger size of the eyeball is one of the reasons which results in this eye defect. Due to the elongated eyeball, the distance between the lens and the retina is more than usual. Because of this larger distance between the two, the image is formed in front. Well, one thing we must note here is that the lens functions in its usual way. It does its work neatly as it's supposed to. The only thing is that the image is formed at a different position. So how do we overcome this eye defect? It can be corrected by using a concave lens. We place a concave lens in front of a myopic eye. Why concave lens? We know that the concave lens diverges the light. And these divergent rays fall on the lens at such an angle such that they refract and come together on the retina, not in front of the retina. Our second defect is hypermetropia. In hypermetropia, a person can see distant objects clearly but cannot see nearby objects clearly. इस कंडीशन में पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली देख पाता है, बट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली उसको नहीं देख पाता. जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ब्लर नजर आते हैं. ये मायोपिया के ऑपोजिट है. इससे हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोल देते हैं. अब इसका क्या कारण है? इसका कारण एक तो उस मायोपिया में आई बॉल इंक्रीज हो गई थी, हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, स्मॉल होनी स्टार्ट हो जाती है. मायोपिया में फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई थी और हाइपरमेट्रोपिया में जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. जो अपनी इमेज रेटिना पर बननी चाहिए वो रेटिना पर बनने की बजाय बिल्कुल उससे बिहाइंड, रेटिना के बिहाइंड बनती है, जिसकी वजह से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते. Cause of myopia. This defect results due to the eyeball being smaller than usual. So the distance between the lens and retina is smaller than it should be in a normal eye. And hence the image of a nearer object is formed behind the retina. And just as myopia can be corrected using a concave lens, this defect can be corrected using a convex lens. The convex lens helps in focusing the light at the correct place. Now that we know the basics of myopia and hyperopia, let's move on to another. Our third defect is presbyopia. Presbyopia, it is the inability to focus up due to hardening of lens. इस कंडीशन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अपना जो आई लेंस है वो बहुत हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है बाय एजिंग. जैसे जैसे एज अपनी इंक्रीज होती है, ड्यू टू एजिंग अपना आई लेंस बहुत इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. एक्सेप्ट दिस, जो सेलरी मसल्स हैं वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं. जो अपनी सेलरी मसल्स जो अपने लेंस को कंट्रोल कर रही हैं वो वीक होनी स्टार्ट. Defect then? As the person ages, the lens reduces its power of accommodation. It means